Good morning, class. Today we are going to start a fresh chapter, that is small business and enterprise. Okay. So far we have completed sources of business finance. This is going to be your first lecture on small business and enterprise. Okay. In this chapter we are going to see the importance of small business. As we all know that India is a country whose major population lives inside the villages. Okay, and India is a country of social welfare, or we can say that that Indian economy is a mixed economy. Okay, it doesn't belong to any capitalist economy. So that is why we find here that there are many people who are engaged in smaller business activities. So that is why this chapter is going to be very much important to understand the business scenario in India. Okay, that means what is the types of business, what are the different types of business that are performed in India. Okay, so as you can see that small business and enterprises. Okay, so the first part is introduction. Okay, so see here. In introduction, it is said that small scale industries contribute significant to the development process and acts as a vital link in industrialization in terms of production, employment and exports for economic prosperity by widening entrepreneurial base and use of local raw materials and indigenous skills. Basically, small scale industries, they are easy to form basically, and they are responsible to provide, you can say that, provide employment, provide the गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. ओके, बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उन सभी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अगर हम लोग देखें तो उन सभी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट जो है प्रोवाइड कौन करता है, तो मतलब उन सभी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. ओके, सो यहाँ पे देखिए, इन इंडिया द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज. मतलब कि if we are talking about Indian context, so in Indian context, basically village and small industry sector, these both sector, whether it is a village industry or we can say that small industry, so they consist both type, that is traditional as well as modern small industry. Traditional, we can say that the handloom, handicraft, okay, coir, sericulture, khadi industry. And if we are talking about the modern industry, so in modern we can take the example of you can say that um, power looms. Okay, and there are many for example production and packaging of chips, etc. Okay, so we can easily find different types of industries in village areas. Okay, uh, basically now we are going to see that what is the basic difference between a small scale industry and a large scale industry, or how we are going to distinguish between the small scale industry as well as large scale industry. So now we are moving forward with types of small scale industry. Okay, so basically these types of small scale industries, there are many points on which we can categorize. The first and basic point is, we can say that the volume of output. Okay, volume of output, or we can say that the turnover of the business or capital requirement, these all are the little merits on which we can simply classify the different types of industries. Okay, let's see here. Here you can see that the emergence, let me mark for you, the emergence of a large scale sector has necessitated the government to include other enterprises covering both small scale sectors and related service entities under same umbrella. Okay, same umbrella means what, कि you cannot think of the economic development by the use of large scale industry. You have to take the help of the small scale industries also. Okay, see, uh, basically there is an act. Okay, here we can find it is necessary to address the concern of such industries. Micro and small and medium, provide them with a single legal framework. Okay, basically in India, we don't have earlier we don't have any strict laws or any strict rules and regulations. Okay, so to look after the matter of a small scale industry, but due to their emergence, or
due to their increased importance in the Indian economy. Now there is an strict act, or we can say that there is a law which is framed to support the micro and small and medium scale enterprise. Here we can see that the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 was passed to address the issues which is related to the definition, credit, marketing and technology upgradation. That means MSMED Act 2006 was passed to take care of the small scale industries in India. Okay, I think so that you are clear with this. Okay, moving forward, accordingly, now we are going to see the enterprises how they are classified. Okay, so basically, accordingly, enterprises are classified into two major categories, that is manufacturing and services. Okay, so first of all, we are going to see the manufacturing. Okay, in case of manufacturing enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule of the industry's development, there are three types of enterprise. That means there are three types of enterprises. One by one, we are going to see them. Okay, see, micro enterprise, small enterprise, and medium enterprise. So here we have three: micro enterprise, small enterprise, and medium enterprise. Okay, so as you can see here, micro enterprise where the investment in plant and machinery does not exceed 25 lakh रुपये. माइक्रो इंटरप्राइज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऐसे बिजनेस यूनिट होते हैं कि जिनमें आप 25 लाख 25 लाख रुपीस से ज़्यादा का प्लांट और मशीनरी नहीं लगा सकते, या ऐसे मतलब ऐसे बिजनेस एंटिटीज़ या ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज की जिसमें आपका असेट जो लगा है तो वो आपका केवल 25 लाख का है. डैट इज़ नोन एज माइक्रो इंटरप्राइज. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल इंटरप्राइज. Okay, so when we are talking about the small enterprise, so this investment raised from 25 lakh to 5 crore rupees. That means in small enterprise, the assets, the plant and machinery that has been used may exceed from 25 lakh but does not exceed from 5 crore. मतलब आप 25 लाख से लेके अगर 5 करोड़ तक का अगर आप प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब अगर आप असेट्स यूज़ करते हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए, सो डैट विल फॉल अंडर द स्मॉल एंटरप्राइज. ओके, एट लास्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द मीडियम एंटरप्राइज. सो इन मीडियम एंटरप्राइज 5 करोड़ रुपीज़ बज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़. मतलब कि जब आप 5 करोड़ रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट्स करते हो, मतलब 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का आप जो है असेट्स लगाते हो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, so basically that type of enterprise is known as medium enterprise. Okay, I hope so that you have easily categorized it. Okay, and now we are going to see services. Okay, so in services, in case of services, again it is divided into the three types. Okay, one by one we are going to see them all. Okay, so I think now it is visible to you. Okay, micro enterprise. So again, listen, as you all know that in production we need more capital, and in services we need less capital. प्रोडक्शन में हमको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है और सर्विसेज में हमको कम कैपिटल की ज़रूरत होती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमको फिक्स असेट ज़्यादा परचेज़ करना होता है. इन केस ऑफ प्रोडक्शन फिक्स असेट्स जो है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए जो कैपिटल है कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. लेकिन अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में फिक्स असेट की रिक्वायरमेंट क्या है? कम है. सर्विस सेक्टर में क्या है आपकी जो फिक्स असेट्स हैं, तो फिक्स असेट्स की रिक्वायरमेंट कम है, तो इसीलिए आपको जो कैपिटल की भी ज़रूरत है तो कैपिटल की भी ज़रूरत आपको कम होती है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर में जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दैट इज़ comparatively very much low or very much less as compared to the production or manufacturing unit. The first one is micro enterprise. So here you can see that where the investment in equipment does not exceed 10 lakh. मतलब जब आप जो है 10 लाख रुपए से ज़्यादा फिक्स असेट नहीं लगा सकते हो एक सर्विस सेक्टर इंटरप्राइज में, तो उसको हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे. ओके, अगेन इट मे exceed equipment is more than sorry
नॉट 1 लाख, इट इज़ 10 लाख, माई मिस्टेक, ओके, लेट मी करेक्ट। कि जब हम माइक्रो एंटरप्राइज के बारे में बात करते हैं तो जब हम असेट्स का टोटल वैल्यू 10 लाख तक ही लगा सकते हैं एक सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज में, तो उसको हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं, ठीक है। और जब ये 10 लाख रुपीज़ से लेके 2 करोड़ रुपीज़ के बीच में होता है, ठीक है, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज बोलते हैं। और जब ये 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में आ जाता है तो इसको हम लोग मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ आई थिंक सो दैट यू हैव क्लियर। देखिए, एक आपका प्रोडक्शन है और एक आपका सर्विस सेक्टर है, ठीक है। प्रोडक्शन में अगर हम माइक्रो के बारे में बात कर रहे थे तो ये था मेरा 25 लाख, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम माइक्रो के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मेरा माइक्रो है 10 लाख, ठीक है। फिर हम अगर स्मॉल के बारे में बात कर रहे थे तो स्मॉल में मेरा क्या था, ये था 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक था। और यहाँ पे अगर हम स्मॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल मेरा क्या है, यहाँ पे स्मॉल मेरा है 10 लाख टू 2 करोड़, ओके। और यहाँ पे जो मीडियम है आपका, तो मीडियम में आपका क्या है कि यहाँ पे आपका था 5 करोड़ टू 10 करोड़ था। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है आपका यहाँ पे मीडियम में अगर हम देखें तो यहाँ पे है 2 करोड़ टू 5 करोड़, क्लियर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ we can say that small scale industries, okay. So I am stopping this lecture here. In next video lecture we will discuss about the village industry, okay. So if you have any problem, so feel free to ask, okay. So till then, thank you, have a great day ahead.